Hari Om, welcome you all to this Kalidasa Dinam, Ashadhasya Prathama Divase. There is a nice tribute paid to Kavi Kulaguru Kalidasa in these words. Kalidasa Giram Saram, Kalidasaha, Saraswati, Chaturmukhothava Brahma Viduhu, Nanyetu Madrusha. The gist, the sap of Kalidasa's work, his poetry, his language, either could be known by Kalidasa himself, or by Goddess Saraswati, or by Chaturmukha Brahma, and not by people like me. This is said by Mallinatha, the greatest of the commentators. If that is the situation of commentator Mallinatha, who are we to talk about Kalidasa? But we want to celebrate Kalidasa on Ashadhasya Prathama Divase. Every Indian, Aurobindo said, has to know Vyasa, Valmiki and Kalidasa. And Meghaduta is the crest jewel of his short poetry called Khandakavya or Geetikavya. And the verse in which Ashadhasya Prathama Divasa comes, that is celebrated now all over the world, right from 50s and 60s in India as Kalidasa Dinam. Let us read the verse in Sanskrit, and then we want to have the verse recited in 10 different Indian languages along with English. So welcome all my team members here, and I wish you all a very great Kalidasa Dinam. So we start with the verse where this phrase comes in. This is in Mandakranta Vritta. तस्मिन्नद्रौ कतिचिदबला विप्रयुक्तः सकामी नीत्वा मासान् कनकवलयभ्रंशरिक्तप्रकोष्ठः आषाढस्य प्रथमदिवसे मेघमाश्लिष्टसानुं वप्रक्रीडा परिणतगजप्रेक्षणीयं ददर्श. On the first day of Ashadha, the Yaksha, who is cursed by his master Kuvera, staying on the Ramagiri mountain, happened to see a dark elephant-like cloud in his budding sports and wanting to have a seat, have a place on the topmost peak of Ramagiri mountain. Parinata Gaja Prekshaniyam Dadarsha. It looked like an elephant who is, trying to, with his tusk and with his temples, trying to break away the ramparts and the embankments of the fort, Vaprakrida. And that after spending Katichid Masan, almost 8 months he has spent, Abala Viprayuktaha, in the separations of his dear wife, who is so helpless she can't reach out to him, nor can he reach out to her. And then he wanted to send a message through this cloud, which is soaring from the south to the north. This is like a monsoon, the monsoon cloud. So Kalidasa's knowledge of the environment, right? And this cloud is soaring high up in the sky from the southern tip to the northern tip to Alaka, beyond Kailasa, and he wants to send a message to her. So let us now have these translations of these verses, mostly in poetic form, because this is such a glorified poem, illustrious poem that almost all Indian languages have translated in their own languages, either in prose or in poetry. We are traversing the entire Bharatavarsha. All the scheduled languages, 22, we cannot take, but half of those, 11 languages we are taking. And we start from the east, from the Prachi Dik, which is very auspicious, and we start with Bengali, the Bangla. Hari Om. Hari Om, Amma. ধন্যবাদ আম্মা এই সুযোগের জন্য। তো আমরা যেহেতু জানি যে কালিদাসের যে মেঘদূত সেটা প্রায় সমস্ত ভাষাতে অনুবাদ হয়েছে, সেই ক্ষেত্রে আমাদের কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও তার গদ্যে অনুবাদ করেছেন। কিন্তু আমরা যেহেতু এখন পদ্য অনুবাদ দেখছি, সেই জন্য একজন
বিংশ শতাব্দীর পূর্বার্ধের কবি শ্রী যামিনীকান্ত সাহিত্যাচার্য, তিনি সংস্কৃতের পণ্ডিত, তাছাড়াও তিনি বাংলার ওপরে অনেক কাজ করেছেন। তার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে মেঘদূত। এখন আমরা তার যে পদ্যে অনুবাদ করা দ্বিতীয় শ্লোক সেটা আমরা পাঠ করব। প্রিয়ার বিরহে কনক বলয় ভ্রংশ রিক্ত কর, কতিপয় মাস বিরহী যক্ষ রহিলা গিরির পর, আষাঢ় মাসের প্রথম দিবসে দেখিলা শানুর গায়, নবজলধর বপ্র ক্রীড়ায় মত্ত গজের প্রায়। হরিওম। নাও we'll see the translation from Odia. हरिओम। धन्यवाद अम्मा। ଆଜି ମହାକବି କାଳିଦାସଙ୍କର ମହାନ କୃତି ମେଘଦୂତର ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ମଧ୍ୟ ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ୍ ବିଦ୍ୟମାନ ଅଛି, ଭାଷାନ୍ତରଣ ବିଦ୍ୟମାନ ଅଛି। ତାର ରଚୟିତା ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ହରେକୃଷ୍ଣ ମେହେର। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ପ୍ରଫେସର ଶ୍ରୀ ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ୟୁନିଭର୍ସିଟିରୁ ସେ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଜୀବିତ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଏ ମହାନ କୃତି ସେଇଥିର ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ଲୋକର ଓଡ଼ିଆ ଅନୁବାଦକୁ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଠ କରିବି। ମଦନା ତୁରସେ ତରୁଣ ଯକ୍ଷ ଝୁରି କୌଣସି ମତେ, ମାସ କେତେ ପ୍ରିୟା ବିରହ ଦୁଃଖେ ଜପି ଲାସେ ପରବତେ। ମଣିବନ୍ଧଟି ଶୂନ୍ୟ ଦିଶିଲା ତାହାର ଶୀର୍ଣ୍ଣ ହାତରୁ, ମହାରଜତର କଙ୍କଣ ଖସି ଯିବାରୁ। ମାସ ଆଷାଢ଼ର ପ୍ରଥମ ବାସରେ ହେଲା ତା ନେତ୍ର ଗୋଚର, ମେଘଟିଏ ଆସି ଘୋଟି ରହିଅଛି ଉଚ୍ଚ ଅଚଳ ଶିଖର। ମଞ୍ଜୁଳ ଶ୍ଵେତ ଦିଶେ କୁଞ୍ଜର ଖେଳା କରେ ଯେଉଁ ରୂପରେ, ମାଟି ଉତ୍ପାଟି ଆପଣା ଦନ୍ତ ପ୍ରହାରୀ ବପ୍ର ଉପରେ। ଓମ୍ ତତ୍ସତ୍। ଧନ୍ୟବାଦ। So we started from east, and after Bangla and Odia, now we turn little south and we go to Andhra, Telangana, and we'll have now the Telugu translation of the same verse. Hari Om. నమస్కారం, నా పేరు కౌశికాచార్య. తెలుగులో మేఘదూతం యొక్క అనువాదాలు లభించకపోవడంతో నేను కన్నడ అనువాదాన్ని ఆధారంగా తీసుకొని ఉత్పలమాల ఛందస్సులో ఈ పద్యాలను రచించాను. ఇందులో రెండవ పద్యాన్ని ఇప్పుడు మనం చూస్తాం. ప్రియ వియోగ తాపమున పలుమాసములు గడిపి కనక కంకణము జారే కృషబాహువు నుండి, ఆషాఢ ప్రథమ దినమున అద్భుత మేఘమును గిరిగజ సదృశముగా గాంచే యక్షవరుడు. నౌ వి విల్ సీ ఇన్ తమిళ్. ஹரி ஓம். மேகதூத்தம் தமிழ் மொழிபெயர்ப்பு. பண்டித மு துரைசாமி ஐயங்கார் 1879 to 1940 ஒரு சிறந்த தமிழ் அறிஞரும் மொழிபெயர்ப்பாளரும் ஆயுர்வேத மருத்துவரும் ஆவார். காளிதாசரின் மேகதூதம் உள்ளிட்ட சம்ஸ்கிருத செவ்வியல் இலக்கியங்களின் முன்னோடி தமிழாக்கங்களுக்காக அவர் பெரிதும் நினைவு கூறப்படுகிறார். இவருடைய மேக சந்தேஷம் 1913 எனும் நூல் இக்கவிதையின் ஆரம்பகால முழுமையான தமிழ் மொழிபெயர்ப்புகளில் ஒன்றாகும். இரண்டாவது பாடல். தன் காதலியை பிரிந்து வாழும் ஒரு காதலன் பிரிவின் துயரத்தால் மெலிந்து போயிருந்தான். அதனால் அவனது தங்க வளையல்கள் கையை விட்டு நழுவி விழுந்து அவனது மணிக்கட்டு வெறிச்சோடி போயிருந்தது. அந்த நிலையில் அவன் அந்த பெரிய மலையில் சில மாதங்களை கழித்தான். ஆடி மாதத்தின் முதல் நாள் அன்று ஒரு காட்சியை கண்டான். ஒரு யானையானது விளையாட்டாக தன் தந்தங்களால் மலையின் பக்கவாட்டு சுவரை முட்டி மோதுவது போல அந்த மலை சாரலை தழுவிக்கொண்டு நின்றிருந்த கண்ணை கவரும் அழகிய கார்மேகம் ஒன்றை கண்டான். காதலி நீத்தே கனகவளை தான் நழுவ, ஏதமுற்றான் குன்றில் சில திங்கள், மாதின்றி சாய்வடியில் களிறு கொம்பால், சுவர் தழுவ கார்முகிலை கண்டான் களித்து. ഹരി ഓം. നെക്സ്റ്റ് വിൽ സീ ഇൻ മലയാളം. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. സംസ്കൃത ഭാഷയിലെ എന്ന പോലെ തന്നെ മലയാള ഭാഷയിലും നിരവധി കവികളും അവരുടേതായിട്ടുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അതിൽ മഹാകവി എന്ന വിഖ്യാതനായിട്ടുള്ള ജി ശങ്കരക്കുറുപ്പ്
അദ്ദേഹം ജ്ഞാനപീഠ പുരസ്കാരം, അതുപോലെ കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി പുരസ്കാരങ്ങളെല്ലാം നേടിയ വ്യക്തിയാണ്. നിരവധി കവിതകളും മറ്റ് സമാഹാരങ്ങളും ഉപന്യാസങ്ങളും വിവർത്തനങ്ങളും എല്ലാമായിട്ടാണ് ജി ശങ്കരക്കുറുപ്പിൻ്റെ കവിത അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൃതികളെല്ലാം മലയാള സാഹിത്യത്തെ പരിപോഷിപ്പിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹം കാളിദാസനാൽ വിരചിതമായിട്ടുള്ള മേഘദൂതത്തിൻ്റെ വിവർത്തനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. മേഘഛായ എന്നാണ് ആ സമാഹാരത്തിൻ്റെ പേര്. നമുക്കതിലെ രണ്ടാമത്തെ ശ്ലോകം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം. നാരിപ്പൂൺപോടുകൂടാതവിടെ മലയിലക്കാമുകൻ കാഞ്ചനക്കാ പൂരിപ്പോയി ശൂന്യമാകും കരമൊടലസമാം മാസമാറേഴു പോക്കി മാരിക്കാർ കണ്ടു കുന്നിൻ ചെരുവിലുരുമതം കൊമ്പുകുത്തിക്കളിക്കും ഹാരിത്വം പൂണ്ടൊരാനത്തലവനൊടു സമാനാഭവാടിപ്പിറപ്പിൽ. ഇതാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാളിദാസൻ്റെ കൃതിയുടെ രണ്ടാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൻ്റെ വിവർത്തനം. അടുത്തതായി നമുക്ക് കന്നഡയിലെ വിവർത്തനം നോക്കാം. നമസ്തേ. Namaste. The famous Khandakavya Meghaduta of Kavi Kulaguru Kalidasa has been brought into Kannada by Dattatreya Ramachandra Bendre, a great Kannada poet and a Gnanapitha awardee. Darabendra has rendered the verses in 4-line stanzas similar to the original meter. Beautiful Adya and Antya prasa with a rhythmic flow has made his translation highly soothing and most enjoyable. A verse from it. ಅಗಲಿ ಇದ್ದರೂ ಆಸೆಗೊಂಡಿರಲು ಗಿರಿಯುಳಂತು ಇಂತು ಕೆಲವೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಕಡಗ ಮೊಳ ಕೈಗೆ ಸರಿದು ಬಂತು ಕಾರ ಹುಣ್ಣಿಮೆಯ ಮಾರನೆಯ ದಿನವೇ ಮೋಡ ಕೋಡನಪ್ಪಿ ಕಂಡಿ ತೊಡ್ಡಿನೊಡ ಡಿಕ್ಕಿಯಾಡುವ ಆನೆ ಬೆಡಗನೊಪ್ಪಿ. येवा कोकण आपलंच असा. आय डोंट नो मालवणी, बट आय एम ट्राईंग कोंकणी फ्रॉम गोवा. हे भाषांतर आहे गोव्यातलं शांताराम बालावलीकर यांनी कोकणी भाषेमध्ये मेघदूताचं संपूर्ण भाषांतर केलं आहे. आणि मेघदूताच्या वेबिनारमध्ये असणारे एक रसिक श्रोते श्रीकांत बोरकर यांनी ते मला पाठवलं, म्हणून मी प्रथम त्यांचे आभार मानते. आणि हा जो आषाढस्य प्रथम दिवस आहे त्या श्लोकाचं कोकणी जे त्यांनी केलेलं आहे बालावलीकर कवींनी, त्याचं वाचन करण्याचा प्रयत्न करते. महिने सरले त्याच गिरीचेर कितल्यो सोंसल्यो विरह यातना भागून जाल्यो बड्यो हातांच्यो गळून पडली भांगरा कांकणा. आषाढाच्या दिसाक पहिल्या तेमकेर दिसलो ढग ओणवेल्लो. आषाढाच्या दिसाक पहिल्या तेमकेर दिसलो ढग ओणवेल्लो. मातये राशी धोंगसूक सज्जसो एक मस्त तो हतीसो दिसलो. एक मस्त तो हतीसो दिसलो. ह्याच्यानंतर आपण गुजराती पाहूया, त्याच्यानंतर मराठी, मग हिंदी आणि मग इंग्रजी. હરિઓમ નમસ્કાર. ગુજરાતીમાં ભાષાંતર કરેલો મેઘદૂતના 2 શ્લોક હું કહેવાની છું. આ ભાષાંતર કિલાભાઈ ઘનશ્યામ નું ખાસ કરીને છે અને એમાં મદદરૂપી છે નીનાબેન ભાવનગરી. તે અદ્રીમાં જમતમ કરી કામી યક્ષે નિવાસ વાલી કેરો વિરહ સહીને ગાળ્યા કૈક માસ. અંગે ઝાજો કૃશ થઈ જતા કષ્ટથી શોચી શોચી સોના કેરું સરધ્યું કડું દૂબળા હાથમાંથી. વિપ્ર ક્રીડા કરી ગિરિતણા શૃંગ ઉથામવાને નીચું માથું કરી નભી ઉભો હસ્તિના હોય જાણે. ઘેરાયેલો નિકટ જઈને શિખરે પર્વતોના દીઠો એણે રમણીય નવો મેઘ આષાઢ થાતા. રામગીરી પર્વતમાં અબલાના વિરહમાં કામી ભાવનાવાળા યક્ષે પરાણે કંઈક માસ ગાળ્યા.
વિયોગથી દુબળો થઈ ગયો. એના હાથમાં પહેરેલો સોનાનું કડું સરી પડતા હાથ અડવો થયો. આષાઢ માસના પ્રથમ દિવસે તે પ્રેમી યક્ષે પર્વતના શિખરે વળગેલ નીચું માથું કરીને ઊભેલા મદમસ્ત હાથી જેવા દેખાતા रमणीय मेघने जोयो. मेघदूताचं मराठी भाषांतर निवडायचं तेवढा प्रश्न पडला मला. अगदी 1919ला विष्णुशास्त्री चिपळूणकरांनी प्रथम मराठी भाषांतर केलं ते आजतागायत ह्या मेघदूताची मोहिनी इतकी अवर्णनीय आहे की अजूनही कवींना, नवनवीन प्रतिभेच्या कवींना आपण त्याचं भाषांतर करावं, करून पाहावं अशी एक स्फूर्ती मिळत असते. त्याच्यात आद्य आपले जे कवी, आद्य कवी नाही म्हणता येणार, परंतु ज्यांच्या जन्मदिवसाला मराठी राजभाषा दिन साजरा होतो ते कविवर्य कुसुमाग्रज, लेखक, नाटककार, समीक्षक आणि कवी वा शिरवाडकर आणि कुसुमाग्रज. तर त्यांनी केलेलं भाषांतर आपण प्रथम पाहूया. ज्ञानपीठ पुरस्कारांनी सन्मानित असं हे व्यक्तिमत्व आणि त्यांचं आणि शांताबाई शेळक्यांचं मी घेणार आहे. मला स्वतःला शांताबाई शेळक्यांचं भाषांतर जास्त आवडतं, परंतु मराठी म्हटलं की मराठी भाषा दिन आणि मग मराठी भाषा दिनाचा उत्सव ज्यांच्यामुळे साजरा होतो ते कुसुमाग्रज हे अपरिहार्य आहे. कृश हातातून गळून पडले सोन्याचे कंकण, कामातुर हो हृदय कामिनी दूर राहिली पण. आषाढाच्या प्रथम दिनी त्या दिसे पर्वतावरी, आषाढाच्या प्रथम दिनी त्या दिसे पर्वतावरी, नयन रम्य घन करी कड्यांवर गजवा क्रीडांगण. हत्तीनी जणू काही क्रीडांगण केलेलं आहे पर्वताचं असं त्यांनी त्याच्यात म्हटलंय. बाकीबाब बोरकर त्याला दंताघाती असं म्हणतात. दंताघाती समद गजसा देखणा मेघ देखे. परंतु सर्वात सुंदर मला जे आवडतं ते शांताबाई शेळक्यांचं मी वाचते. गिरीवरी त्या महिने काही कंठित तो राही विरही जन. गिरीवरी त्या महिने काही कतिपय मासांनित्वा. प्रत्येक भाषेच प्रत्येक शब्दाचा अनुवाद त्यांनी केलेला आहे. गिरीवरी त्या महिने काही कंठित तो राही तो विरही जन. सखी विरहे कृश असा जाहला गळे करातून सुवर्ण कंकण. आषाढाच्या पहिल्या दिवशी बघतो शिखरी मेघ वाकला. कोंकणीमध्ये ओण्णवेल्लो असा शब्द वापरलेला आहे. किती सुरेख आहे पहा. आषाढाच्या पहिल्या दिवशी बघतो शिखरी मेघ वाकला, टक्कर देण्या तटभिंतीवर क्रीडा तुर गज जणू ठाकला. मला वाटतं वप्रक्रीडा परिणत गज प्रेक्षणीयम ददर्श ह्याचं इतकं सुंदर भाषांतर शांताबाईंनी केलेलं आहे. भावकाव्यात मराठी साहित्यामध्ये अजरामर स्थान शांताबाईंचं आहे आणि त्यांचं हे भाषांतर अतिशय हृद्य आहे. आता ह्याच्या पुढे आपण पाहूया हिंदी आणि मग इंग्रजी. हरिओम. अन्य भारतीय भाषाओं की भांति हिंदी भाषा के साहित्य पे भी मेघदूत का अत्यंत प्रभाव परिलक्षित होता है. अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने प्रिय प्रवास नामक काव्य की रचना की थी, जो कि हिंदी खड़ी बोली भाषा का प्रथम काव्य माना जाता है. इसमें उन्होंने पवन दूतिका की कल्पना की है, जो कि मदनातुर राधा का संदेश श्री कृष्ण तक पहुंचाती है. तत्पश्चात आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने मेघदूत एक पुरानी कहानी इस ग्रंथ की रचना की है, जो कि न केवल अनुवाद मात्र अपितु मेघदूत का सांस्कृतिक अध्ययन भी है. जो अनुवाद मैं प्रस्तुत करने वाला हूँ वह पंडित रामदास राय द्वारा रचित है, जिन्हें काव्य तीर्थ भी कहा जाता है. इसका प्रकाशन 1953 ईस्वी में हुआ था. प्रस्तुत है यह अनुवाद. कनक वलय के गिर जाने से धारे निज प्रकोष्ठ को रिक्त, उस कामी ने उस पर्वत में बिता मास निज कितने तिक्त. आने पर आषाढ़ मास के पहले दिन के सुभग स्वरूप, मिले श्रृंग से गढ़ क्रीड़ारत, करिवर साघन लखा अनूप. इसी कविता का हरिगीतिका छंद में भी अनुवाद उपलब्ध है. वह इस प्रकार है. बसिता ही महीधर में बिरही कितने एक मास बिताई गयो, भुज बंद गए गिर सोरन के इतनो थकी दुबर गात भयो. फिर लागत मास अषाढ़ लख्यो घन सैल पे सोहनो आई छयो. झुक के मनहु गज राज बलि गढ़ ढावन खेल मचाई रह्यो.
धन्यवाद। अब हम अंग्रेजी भाषा में अनुवाद देखेंगे। Hari Om. The first English translator of Kalidasa's Meghdut was not a poet but a doctor. Horace Hayman Wilson, born in London 1786, he came to India as a surgeon along with the East India Company. And soon he became fascinated by Sanskritam and India's literature. And in the year 1830, he composed the first English translation of Kalidasa's Meghdut, known as the Cloud Messenger. But that's not all. He also compiled the first Sanskritam to English dictionary and translated major Hindu scriptures like the Vishnu Purana, Sankhya Karika, and Rigveda Samhita. He was among the earliest scholars to recognize the literary genius of Kalidasa, and he also introduced India's classical heritage to the world. Now, let's see the second verse. To these drear hills, through circling days confined, in dull, unvaried grief, the god repined, and sorrow, withering every youthful charm, had slipped the gold bracelet from his arm. When with Ashada's glooms the air was hung, and one dark cloud around the mountain clung, in form some elephant whose sportive rage ramparts scarce equal to his might engage. Now let's see verse 62 in Sanskritam. So we are back with the second verse now. Hope you have all enjoyed the first verse, Ashadhasya Prathama Divase, celebrating Kalidasa through different Indian languages, 11 of them, and English. We'll go to the next verse, not the next in chronology, but a very nice verse from Purva Megha only. In some editions, it is 60 or 62 or 63. So I'll read the verse in Sanskrit, explain a little bit, and then we'll follow the same order as we followed for the Prathama, Ashadhasya Prathama Divasa. Hitva tasmin bhujagavalayam shambhuna datta hasta krida shaile yadicha vicharet padacharena gauri bhangi bhaktya virachita vapuho stambhitantarjalaughah sopanatvam kurumani tatarohanayagrayayi. See, the meter is Mandakranta, Mabhana Tatagaga, 17 aksharas. Mandam mandam chalati, mandam mandam nudati. And it is said, Pravrut pravasa vyasane Mandakranta virajate. And now here it's nicely raining outside and we are reciting Meghaduta. What a nice coincidence. So this is a very beautiful verse. For Kalidasa, Shiva and Parvati, the divine couple, are Jagatah Pitarau. Jagatah Pitarau Vande, Parvati Parameshwarau. Now they are married. And after marriage, Parvati goes along with Shiva and she wants to go up the hill. Shiva is like a Bairagi. He has been brought up there and he goes fast. But Parvati, Sukumar, Lavanya Khani, for her, ascending the mountain, that mountainous region is little bit difficult. So Shambhu, what does he do? He gives his hand to her so that holding his hand, she can slowly go. But there is one problem. Shiva always wears the Sarpa Kankana and Parvati is afraid of that. So for the sake of Parvati, he discards his Sarpa Kankana, right? See, the husbands have to take care of their wives like this, okay? So he discards the Sarpa Kankana, Hitva Bhujagavalayam Shambhuna Datta Hasta Yadicha Padacharena Gauri Krida Shaile Vichare. So that's a Krida Shaila. It's a pleasure mountain for Shiva. And Gauri goes with him. And that time, because she finds it bit difficult to ascend, to climb the uphill, Yaksha, that is Kalidasa, tells the Megha, who is, Kamarupam Maghonaha Jatam Vangshe Bhuvana Vidite, and therefore the cloud can assume any form which it likes. So now the Yaksha tells him, you have watery mass in your belly, right? What is a cloud? It's a water inside. What you should do?
you solidify all that watery content. Stambhita antar jalaugha. Antaha yaha jalaugha tasya stambhanam kuru. After that, what will happen? This cloud, being a cumulonimbus category cloud, it has curves, right? And therefore, the water gets solid, it becomes ice, not snow, stambhita. And then all the curves will work as steps, hard, rocky steps for Parvati to ascend. What a beautiful Utpreksha. And there is another, very devotional element which is attached to this. This requires the Megha to surrender himself unto the lotus feet of the Lord. On his body, so to say, Shiva and Parvati will go. What a sadbhagya, what a saubhagya, so much fortune of how blessed the cloud must feel. It is like a self-effacement, forgetting our own self. अपने आप को निछावर कर दो, अपने आप को बिछा दो उनके चरणों के तले. That requires that type of shraddha, that type of bhakti which the cloud has for Shiva and Parvati, Jagatah Pitaro. So very beautiful verse. I thought we will have it again in the same order like Bangla, Odia, Telugu, and Tamil, Kannada, Malayalam, etc. Let us have it in Bengali now, yeah. ত্যাজিয়া ভুজগ বলয় ভবেশ ভবানীরে দিল কর পাদচারে যদি বিহরেনে তিনি সে বিহার গিরিপর স্তম্ভিত করি অন্তর বাড়ি অমনি সম্মুখে গিয়া মণিতটে যেতে রচিও সোপান হলেবর বাঁকা ইয়া. হরিওম. अब मुई उड़िया संस्कार सुनाइबी. मृडानिंकर सम्मुखरे महेश हस्त बड़ाइले से ही क्रीड़ा पर्वत अनुरागरे मंडाली घेरा होई थिबा जोई যদি ভয়রে মুঞ্জিসে কর উমাপতি চালি জীবে বেনি পয়রে মেনা সুতাঙ্ক অগ্রতে যাই ঘনীভূত নীর সোপান সম মেঘ হে তুরিত রূপান্তরিত করিব আপনা তনুক তুম মণিতটে থই পাদ নিজরি মুদিত চিত্তে ఆరోహిబే తహి మహేశ్వరి. హరి ఓం. శంభు కరంబు గైకొని సర్పబలంబు విడిచె గౌరి క్రీడాగిరిన్ విహరింప గోరుచు నడిచె సౌమ్యమై భక్తి వినంబుతో వంగి బద్ధ జలంబుగ నుండుము రత్న తటంబు చేరుటకై మెట్టగు మేఘ ముందుగన్. 62வது பாடல். பார்வதி தேவி தன் விளையாட்டு குன்றான அந்த கைலாய மலையில் சிவபெருமானோடு உலா வரும்போது சிவன் தன் கைகளில் அணிந்துள்ள பாம்பு வளையல்களை பார்வதியின் கைகளில் படாதவாறு சற்று விலக்கி பிடித்து கொண்டு அவளுக்கு கை கொடுத்து கூட்டி செல்வார். அப்படி அவர்கள் மலையில் கால்நடையாக நடந்து செல்லும் போது மேகமே, நீ அவர்களுக்கு முன்னே சென்று உனது உடலுக்குள் இருக்கும் தண்ணீர் துளிகள் சிதறி அசையாதபடி உன்னை இறுக்கிக்கொள். பிறகு உனது உடலை அடுக்கடுக்கான படிகளாக மாற்றி அங்கே அணிவகுத்து நில். அந்த பார்வதி தேவி ரத்தினங்கள் நிறைந்த அந்த மலைப்பாதையில் எளிதாக ஏறி செல்வதற்கு ஏற்ற ஒரு படிக்கட்டாக நீ மாறி அவளுக்கு உதவி செய்வாயாக. காரிகை பார்வதியோடு முக்கண்ணன் கைலாயச் சாரலில் கைவளையல் விலக்கி நேரிழையால் கை கொடுத்து காத்திடவே கூட்டி செல்வான் കാർമുകിലേ പടിയാകി പരിന്ത് നിൽ. ഹരി. മഹാകവി കാളിദാസൻ മന്ദാക്രാന്ത വൃത്തത്തിലാണ് മേഘദൂതം രചിച്ചിട്ടുള്ളത്. മഹാകവി ജി ശങ്കരക്കുറുപ്പ് മലയാളത്തിലേക്ക് അതിനെ വിവർത്തനം ചെയ്തപ്പോൾ ശ്രദ്ധര വൃത്തത്തിലാണ് ഈ പദ്യങ്ങളെല്ലാം മൊഴിമാറ്റിയിട്ടുള്ളത്. നമുക്ക് ഹിത്വാ തസ്മിൻ എന്നുള്ള ആ ശ്ലോകത്തിന്റെ മലയാള പരിഭാഷയിലേക്ക് നോക്കാം. ചൂളിപ്പോകാതിരിപ്പാനുരകവളകളഞ്ഞീശ്വരൻ കൈകൊടുക്ക കേളിക്കുന്നിൽ ചരിപ്പാൻ മലമകൾ എഴുന്നള്ളുന്നതാകിൽ പദത്താൽ മോളിൽ കേറുന്നതിനായി
മണിമയമടിവാരത്തു സോപാന ഭംഗി പാളിച്ചാർത്താരചിക്കൂ ഘനജലവടിവിൽ ചെന്നു നീ അഗ്രയായിൻ. ഇതാണ് മലയാള പരിഭാഷ. ತೋಳ ಹಾವ ಬೆಚ್ಚಿಟ್ಟು ಸತಿಗೆ ಕೈಗೊಟ್ಟು ಕಾಲನಡಿಗೆ ಲೀಲೆ ಎನಲು ಶಿವ ಬೆಟ್ಟ ಒತ್ತಬಹುದಾಗ ಗೌರಿಯಡಿಗೆ ಮೇಘಮಯ್ಯ ನೊಟ್ಟಯಿಸಿಕೊಂಡು ಘನ ದಟ್ಟ ಒಟ್ಟಿಲಾಗಿ ಶಿವನ ಸತಿಯ ಪದ ತಲಕೆ ಎರಗುಮಣಿ ತಟಕೆ ಮೆಟ್ಟಿಲಾಗಿ. आता आपण कोकणी बघूया. क्रीडा पर्वतार पायांनी भोपाक जेन्ना पार्वती मुखार सरता. क्रीडा पर्वतार पायांनी भोपाक जेन्ना पार्वती मुखार सरता. सोरपा वलया हातातले काढून सोरपा वलया हातातले काढून शिव गौरीच्या हातात हात देता. शिव गौरीच्या हातात हात देता. वयर सकयल या मार्गात मिटय तुझ्या उदकाची करून अडावणी. पाणी अडवणे. स्तंभितांतर जलौघा. तुझ्या उदकाची करून अडावणी. तुझे कुडीची सपना जाऊची ताची सुखाची करपाक भोवडी. तुझे कुडीची सपना जाऊची ताची सुखाची करपाक भोवडी. इथे कुडी हा शब्द वापरलेला आहे. हा फार वेगळा आहे आणि अतिशय कमी वेळा हल्ली तर मराठी भाषेतही वापरला जात नाही हा फारसा. जीवाची कुरवंडी करणं, जीव ओवाळून टाकणं आणि ह्या देहाला कुडी म्हणणं हे असे शब्द आता जरा विस्मृतीत गेलेले आहेत. म्हणून मला हे शांताराम वालावलीकरांचं भाषांतर ह्याच्यासाठी आवडलं की हा एक कुडी हा एक फार विस्मृतीत गेलेला शब्द त्यांनी इथं वापरलेला आहे. काढ्या केडे भुजगवलयो शंभुनो हात झाली. क्रीडा शैले कधी विचरता होय त्या गौरी चाली. तो अभ्रोने जलनवगळे तेम तू गोठवीने थाजे अग्रे मणितट जवा सारू सोपान रूपे. પર્વતમાં વિચરતા ઠોકર ન લાગે એવા વિચારથી શંભુ પોતાના હાથનો આધાર ગૌરીને આપે એ પહેલા જ સર્પના કડા ઉતારી લે. હે મેઘ, તું પણ ગૌરી ક્રીડા માટે પર્વતમાં ફરતા હોય ત્યારે તારી અંદરના જળને રોકીને સુંદર ભાતવાલી પગથિયાની હાર રચીને ગૌરી શંકરના મણિતટ આરોહણ માટે તું બંનેની આગળ જજે. શંકર પાર્વતીના પરિણય પછીની વિધિનો અહીં કલ્પના માટે ઉપયોગ થઈ રહ્યો છે. શંકર પાર્વતીના પગનો સ્પર્શ પામતા મેઘ, તું તારા જન્મનું સાફલ્ય પામીશ એવી ધ્વનિ દર્શાવી છે. आता आपण मराठी बघूया. कुसुमाग्रजांचं आणि शांताबाई शेळक्यांचं. खरं चिंतामणराव देशमुख आहेत, वसंतराव बापट आहेत. इतक्या जणांनी त्याचं भाषांतर केलंय की काय घेऊ आणि काय नको घेऊ असं मला झालं. तर आता कुसुमाग्रजांचं एक आणि शांताबाईंचं एक मी भाषांतर ह्याच्यातलं वाचते. टाकून या सर्पांचे कंकण हाती धरुनी कर. ह्याच्यात अनुप्रास फार सुरेख साधलाय. टाकून या सर्पाचे कंकण हाती धरुनी जर गिरिजे चाकर चालत आले भूवरती शंकर. जर कर शंकर. टाकून या सर्पाचे कंकण हाती धरुनी जर गिरिजे चाकर चालत आले भूवरती शंकर. होऊन या घनरूप लागण्या मंगलती पाऊले. होऊन या घनरूप लागण्या मंगलती पावले. रत्न तटी चढण्यास पायरी निज देहाची कर. स्वतःच्या देहाची पायरी कर. सोपानत्वम कुरु हा त्यांनी अनुवाद ह्याच्यामध्ये घातलेला आहे. आणि शांताबाईंनी आणखीन छान सांगितलेलं आहे. प्रत्येकाची आपापली स्वतंत्र प्रतिभा आहे. सर्पवलय टाकून आपुले हात शिवाने तिजला देता. सर्पवलय टाकून आपुले हात शिवाने तिजला देता. क्रीडा शैली विहार करण्या सजेल जरका हिमनग दुहिता. गौरी किंवा पार्वती हिला एक छान शब्द म्हणजे तो
त्याचा तालही पकडायचा आहे, त्याचा अनुप्रासही साधायचा आहे. त्यामुळे देता ह्याच्यासाठी हिमनग दुहिता. क्रीडा शैली विहार करण्या सजेल जरका हिमनग दुहिता. मणिमय तटते चढण्या तिजला साह्य करावे धरून हेतू. तुझा हेतू काय असला पाहिजे की पार्वतीला सहाय्य करायचंय, मदत करायची आहे चढण्यासाठी. मणिमय तटते चढण्या तिजला साह्य करावे धरून हेतू. जळधारा रोधून अंतरी स्तंभितांतर जलौघा. शांताबाई शब्दशः करतात पण अतिशय सुंदर करतात. जळधारा रोधून अंतरी निज तनुचा सोपान करीतु. निज तनुचा सोपान करीतु. भुजग वलय विरहित शंकर के दिए हुए यदि कर को धार, गौरी फिरती क्रीडागिरी में दीख पड़े जाती पगद्वार. तो आगे जा जल समूह निज करते भीतर में घन रूप. उसके पद सुख स्पर्श योग्य वपु बन जाना सोपान अनूप. इसी पद्य का चौपाई छंद में भी अनुवाद है. लिए शंभु कर निज कर माही, भुजग वलय जाकर बिचनाही. गवरी होई पायन यदि फिरती, वा क्रीडा गिरि माही विचरती. पौरी रूप सुभग बनिली जो, पुष्ट नीर अंतर को कीजो. धरी धरी पग तो पै जब धावे, चढ़त चरण कछु खेद न पावे. Happily across thy long and mountain way, in sport may Gauri with her Shiva stray. Her serpent bracelet on his breast displaced, and in her arms the mighty god embraced. Should thus it fortune be a time to lend, a path their holy footsteps may ascend. Close in thy hollow form thy stores compressed, while by the touch of feet celestial blessed. हरि ओम. सहृदयाः रसिकाः, I hope you enjoyed this our attempt, a little attempt of celebrating Kavi Kulaguru Kalidasa, the greatest poet in the world, through just 2 verses of Meghaduta, the Shiromani, the Chudamani of the Khandakavyas or the Giti Kavyas. Kalidasa inspired so many poets after him, and there started a parampara of Giti Kavyas and Duta Kavyas, Hamsaduta, Pikaduta, and even Kakaduta. So many Duta Kavyas emerged after that. People celebrate Kalidasa Dinam in various ways. There are dances, there are dance ballets, there is Kavya Vachana, there is Gayana, there is only instrumental music like Yakshapatni does for Yaksha, so many ways. There are 64 kalas in our Sanatana Dharma. Any of the kalas can celebrate Kalidas Dina. This is our humble attempt to celebrate Kalidas Day in 11 different languages of India and English as a link language to the world. I hope you enjoyed. Wishing you all the best. And I wish that everybody would read at least one poem of Kalidasa. Start from Meghaduta, go to Shakuntalam, and then perhaps Raghuvamsham. Wish you happy reading of Kalidasa Sahitya. Hari Om. Thank you.